Haji, the good thing is that we have what we have done. We have completed your coursework, as I said in the last class. हमने वो coursework अच्छा खासा complete कर लिया है, and that was all the fundamentals. And now we will start to move on to a little bit more advanced topics from what we have been doing. Before we move to the advanced topic, there are two auxiliary things that I need to tell you, okay, about those fundamentals. The two topics, auxiliary topics that you should know. Okay? क्योंकि वो शो अप होते हैं कुरान के अंदर भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. तो वो दो छोटे से टॉपिक्स है, वो क्विकली से कवर करेंगे, एंड देन विल सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, एंड देन विल मूव ऑन एंड इंशाल्लाह कवर द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है. So the first topic is the five the हर चीज में एक चीज स्पेशल होती है, यहाँ पे भी the five specialisms है. There are five specialisms. ठीक है. इन फाइव स्पेशलिज्म्स को आपने समझना है. मुश्किल नहीं है, आसान है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द स्टेटस को. ये रेवोल्यूशनरी हैं, इनको अपने तरीके से काम करना पसंद होता है. ठीक है. वो फाइव इस्म्स कौन से हैं? सो लेट मी डू वन थिंग हियर. सो I'll do meaning here. ठीक है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म हियर, एंड देन we'll do just like that. इस तरह कर लेते हैं. रफा, नसब और जर. ये चीजें हमने इनकी समझनी है. ये जो फर्स्ट इस्म है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका आपको पता होगा. यू माइट प्रॉब्ली नो व्हाट इट मीन्स. अब उनका अंदाजा है कुछ? उर्दू के अंदर बाबा को क्या कहते हैं? अब्बा. अब्बा कहते हैं ना. ये वही है. ठीक है. अबुन इज बेसिकली फादर of Arabic, and its standard form abun, aban, abin, just like the Muslim chart. Muslimun, Musliman, Muslimin. Problem comes कि जब आप इनको as a मुदाफ यूज करते हैं. ठीक है. When they are made light, let's say in rafa form, if you have to make it light, your first thinking will go, okay, remove the tanween, call it abu. But that's not how they work. They don't like it. Okay? ये वो इस्म्स होते हैं जो कि एंडिंग साउंड से अपना स्टेटस नहीं बताते when they are used as मुदाफ. Okay? Rather, they use a letter that corresponds to that ending sound. अब आप मुझे बताएं, जो दम्मा की साउंड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अरेबिक लेटर कौन सा बन सकता है? नून. नहीं, दम्मा की ऊ साउंड है, not un sound. वाव. Wow. Right? So what they would do is they would rather attach a wow in front of them. Right? And when you see abu like this, यहाँ से आया उर्दू का अब्बू. अबू जब आप यहाँ पे ऐसे देखते हैं, so that is a light form in rafa, and this wow is telling you that this is rafa. Okay? That's how they operate. This is the abnormality with that. अगर आपको इसको नसब बनाना हो, वो कौन सी साउंड है जो कि फत्हा को कॉरेस्पॉन्ड करेगी? अलिफ. फत्हा को. अलिफ. अलिफ. अबू, अबा, और अब जर बनाना हो तो कसरा को कौन कॉरेस्पॉन्ड करेगी? अबी. ठीक है. एंड दैट्स हाउ दे वर्क. तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए जो कुरान में यूज होते हैं इस तरह के अल्फाज. ठीक है. 5 हैं टोटल ये, और हम वो 5 करेंगे यहाँ पे, एंड दे फॉलो द सेम पैटर्न. देयर इज वन अबुन, that is abu in light rafa, aba in light nasab, and abi in light jar. And the difference is they don't use ending sound, they use the ending letter that corresponds to that sound. ठीक है. सिंपल है. so far so good. बस अब आपको ये समझ आ गया तो आपको समझ आ गया. अब आपने बस देखना है वो 5 कौन से वर्ड्स हैं बेसिकली. द सेकंड वर्ड इज, ये काफी यूज करते हैं, हम भी करते रहते हैं दोस्तों के साथ. अखुन का मतलब पता हो शायद आपको. ब्रदर. ब्रदर.
अखुन की रफा फॉर्म बनाने की खुद ही कोशिश करें, बना लेंगे आप लोग, आई एम श्योर. अखू अखु, अखु. व्हाट अबाउट नसब? अखा अखा. व्हाट अबाउट जर? अखी अखी. और ये वर्ड यूज होता है काफी जगह पे. अखी लड़कों में यूज होता है, मेन में यूज होता है, ब्रदर. ठीक है. So this is akhu, akha, akhi, and these are light forms, and they will always show up as mudaf. ठीक है. इनकी नॉर्मल फॉर्म ये है. जो सिंगुलर नॉर्मल फॉर्म है, दैट इज जस्ट लाइक दैट. अबुन, अबन, अबिन. मुस्लिम चार्ट भी प्रोड्यूस होगा. अबानी, अबैनी, अबैनी. लेकिन जब आप इनको लाइट करेंगे, देन यू विल गो टू दिस अप्रोच. ठीक है. ये सिंगुलर के साथ प्रॉब्लम है. जब आप अबानी को लाइट करेंगे, तो देन यू विल जस्ट रिमूव द नून. ठीक है. another word, ये आपको शायद ना पता हो. दिस इज hamun. Hamun is father-in-law. ठीक है. It's father-in-law. Important word है सबके लिए. Very important. ठीक है. Very important. I know. ये वो केस है जिसमें मदर इन लॉ इज नॉर्मल. ठीक है. एंड फादर इन लॉ थोड़े से यूनिक है. ठीक है. अब इसके अंदर आप, आई एम श्योर आप, यू कैन डू दैट. सो इट्स गोइंग टू बी हमू, हमा एंड हमी. ठीक है. हमी. ठीक है. दिस इज फादर इन लॉ. अब मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड लास्ट वन, विच इज famon. Now famon means mouth. 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 अब famon जो है ना, वो थोड़ा शरारती है. famon कहता है कि यार ठीक है, तुम लोग सब पैटर्न फॉलो कर रहे हो, बट आई वांट टू गो लिटिल बिट एक्स्ट्रा माइल. So what I will do is I am going to lose my meme. Okay. I'm going to lose my meme. So I'm going to be fu in Rafa. I'm going to be fa in Nasab, and I'm going to be fi in Jar. Oh. And that's the only exception. ठीक है. कॉमन के साथ ये केस है कि ये मीम को लूज कर देता है. ठीक है. एंड you don't need to memorize this, you just need to know this. कि जब आपको ये वर्ड शो अप हो, then you know that you have been through this journey, and so you can decode them. ठीक है. So these are the 4 words. ठीक है. अब इसके अलावा मैं आपको एक वर्ड और बता रहा हूँ. This means possessor of. फफाद भाई, ये फी और दूसरा फी जो है, जी. उसमें फर्क कैसे करेंगे? A context. That fee would mean in, this fee would mean mouth, and it will not make sense when you will look in the context. ठीक है. कि mouth की sense बन भी रही है उधर की नहीं. So as you grow in your Arabic studies, there will come a time where Arabic grammar will stop giving you the answers, and common sense will start giving you the answers. ठीक है. तो वो वक्त आएगा, और ग्रेस अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद आएगा, और फिर हमें जरा एनालाइज करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को, आसपास के अल्फाज को. ठीक है. राइट. अब इसके अंदर देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो वर्ड मैं आपको बताने लगा हूँ, दिस वर्ड ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स एज अ मुदाफ. ठीक है. एंड दिस वर्ड इज zu in rafa, the in nasab, and z in jar. Zu, za, zi. Zul arshil makin. Zul jalalil ikram. Right? So ये जो word है zul, it means possessor of. Zul jalal, possessor of the jalal, the majesty. Right? So these are light forms,
and they always show up like this, Zuzazi. Okay, so this is what you need to know. मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कुरान से. I think it's सूरह तकवीर, if I'm not forgetting. तकवीर ذي قوة, possessor of the quwwah, the power. Inda Z, and now Inda and Z. Inda आपको पता है एक special mudaf है, right? Now this is a special mudaf, and this is Z also used as mudaf, but it is also light here in jar form, right? Zil arshil makin, possessor of the arsh. Okay, so these types of words are used in Quran quite a lot. Okay, so when they show up, you at least know, okay, there is something similar we have learned, and then inshallah we'll discuss more deeply when we go into decoding. So this is auxiliary information you need to know. ये जो वर्ड है, इसका मैं एक फेमिनिन वर्जन भी आपको लिख देता हूँ यहाँ पे. इस वर्ड का फेमिनिन वर्जन है जात. ये भी शो अप होता है like this, but this version is normal. ठीक है, ये अपना स्टेटस नॉर्मली दिखाता है. इट्स ऑलवेज लाइट जातु, जाता एंड जाती, like this. Okay? There is no abnormality there. Okay? It's normal. So this is the case where feminine is normal and masculine is problematic. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अच्छे खासे कुरान में नजर आएंगे. आई थिंक यहाँ पे भी वस्समाई ज़ातिल बुरूज, वस्समाई ज़ातिल बुरूज. Now this zati is a feminine form of zuzazi, possessor of. Okay? तो ये वो 5 स्पेशल isms हैं जिसका आपको पता होना चाहिए. ठीक है, you should know. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? टेंशन लेने का नहीं है, देने का है, सिर्फ सुनना है आपने. ये इंशाल्लाह जब आएगी बात तो फिर इंशाल्लाह उस वक्त ये चीजें सारी रिवाइज हो जाएंगी. एक और बात मैंने आपको बतानी है. आपने when Pharaoh was alive you studied flexibility. ठीक है, you studied flexibility back in the days, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था partly flexible, right? पार्टली फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया था प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस जो होती है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होती है. हमने अरब नेम्स पढ़े थे, 4 अरब नेम्स पढ़े थे, मोहम्मद, हूद, सालेह, शुएब. मैंने कहा था इनके अलावा जो नाम होंगे वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे. वी कॉल देम नॉन अरब नेम्स एट दैट टाइम, राइट? ये सारी चीजें हमने की थी. ठीक है, इसमें 2 चीजें थी जो उस वक्त मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना वो डिप्रेसिंग बन जाता. ठीक है, एक चीज और इसमें आप लिस्ट में ऐड करेंगे कि फेमिनिन नेम्स जो होते हैं अरबिक के अंदर, दे आर 99% ऑफ द टाइम पार्टली फ्लेक्सिबल. ठीक है, फेमिनिन नेम्स. और जो यूनिकली मैस्कुलिन होते हैं, यानी ऐसे नाम जिनका फेमिनिन काउंटर पार्ट नहीं बन सकता या एग्जिस्ट नहीं करता, those types of names are also partly flexible. I'll give you an example. For example, Hamza, this Hamza. इसका कोई feminine counterpart नहीं है, right? This would be partly flexible. For example, Omar. There is no counterpart in feminine, Omar. Or Usman. Counterpart Arabic में कोई ऐसा नहीं है इनका. तो इस तरह के जो नाम होते हैं, they are also uniquely masculine, partly flexible. How would we know
कि which name has a counterpart and which name does not have a counterpart? Well, I'll give you a list. और आपको पता है कुरान के अंदर हमने according to the Quranic context, it's very simple for us. We just need to remember 4 names. Okay, and we need to remember 3-letter word with sukoon in the middle are fully flexible. These 2 rules we need to remember. Every other name in Quran is partly flexible. ठीक है? वैसे So this is हमजा जी जिस तरह लिखा हुआ है तो इसको तो हम ऐसे भी ता मरबूता ना लेते, ये तो खैर पता है हमें। जी 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 बिल्कुल। आपको याद होगा जब जेंडर पढ़ा था तो हमने रियल फेमिनिन और फेक फेमिनिन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बायोलॉजिकल मैस्कुलिन है, यू विल नॉट असाइन देम फेमिनिन। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फेमिनिन होते हैं वो अलिफ मकसूरा पे एंड होते हैं ऐसे करके। But it doesn't mean कि you pick up Musa and assign feminine to this. Doesn't make sense, right? इस तरह करके। तो जो बायोलॉजिकली फेमिनिन नहीं है उसको आप नहीं असाइन करेंगे फेमिनिन, बेशक वो तामरबूता में भी एंड होते हो। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो आउटस्टैंडिंग थी। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सो यू हैव द फुल पिक्चर। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज द बुक and I just want you to have a perspective of where you stand. This is a book of dream program. ठीक है, ये इसके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ड्रीम प्रोग्राम के जो उस्ताद ने मान किया। ठीक है, द स्टडी इज कॉल्ड नहू। नहू इज द ग्रामर स्टडी ऑफ अरबिक। ठीक है, आपने ये सब कर लिया हुआ है, एवरी सिंगल थिंग इन दिस 4 चैप्टर्स। इसमें टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, ये तकरीबन ये 50 पेजेस की बुक है अभी जो मैंने 4 चैप्टर्स निकाले हैं। ऑल ऑफ दिस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरी है इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट, बट इसमें सारी कॉन्सेप्ट जो हमने किए हैं, स्टेटस नंबर, जेंडर टाइप, और जो आपके फ्रैगमेंट्स है, इनविजिबल इज है, एवरीथिंग इज है इन डिटेल। ठीक है, आई विल शेयर दिस विद यू नाउ and this is your reference to go back every time you want to review something or read out about that particular concept. ठीक है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी समरी। अच्छा, एक चीज और, इसमें हर्फ ऑफ जर जब बताए गए हैं ना यहाँ पे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हर्फ ऑफ जर बताए गए हैं, जैसे मोज, खुला, टोटल 17 होते हैं आई बिलीव, बट कुरान में 11 यूज होते हैं। 11 तो वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन द 11। ठीक है, तो ये हाशा और ये जब आपको हाशा, अगर हाशा हुशा करने लगे आपको तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो वी जस्ट फोकस ऑन दोज 11 दैट यू नो। एग्जाम्पल्स मौजूद है, प्लस इस पे एक अच्छी समरी है एक जगह पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। I'll share that with you inshallah after the class. This one is a good summary of the 3 types of words, status number, gender type, हर किसी के fundamental concepts यहाँ पे लिखे हुए हैं। You might want to print it out, put it on a wall, whatever works for you. और जब आप fragments पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पढ़ तो चुके हैं वैसे, जो फ्रैगमेंट्स हैं उसकी भी एक समरी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसम इशारा विच इज पॉइंटर, मौसूफ सिफा, हर्फ ऑफ नस्ब, जार मजरूर, इदाफा। ठीक है, so this is where you stand. Mashallah, it's a good progress, very good progress to go through all of this. ये मैं आपके साथ क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है, so you should have it in your records. Any questions before I move on from here? नहीं, क्लियर है? चले, जबरदस्त। अब हम जो करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज होता है वो होता है लेटर। जब बहुत सारे लेटर्स कंबाइन होते हैं तो उनसे बनते हैं वर्ड्स, राइट। जब वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो बनते हैं फ्रैगमेंट्स, राइट। आपको लेटर्स आते हैं, आपने 3 टाइप ऑफ वर्ड्स को फंडामेंटल्स के लेवल पे पढ़ लिया है। आपने इसम पढ़ा, आपने फेल पढ़ा, आपने हर्फ भी कुछ देख लिए, राइट। Then you moved on and you studied the fragments. इसम बेस्ड फ्रैगमेंट्स पढ़े आपने प्राइमरीली। ठीक है, जब बहुत सारे फ्रैगमेंट्स कंबाइन होते हैं, दे गिव यू सेंटेंसेस, राइट। दिस इज वेयर वी आर नाउ। ठीक है, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे।
Sentences जब combine होते हैं तो they give you paragraphs. Paragraph combine होते हैं, they give you chapters. Chapters, multiple chapters can come together, they can form a topic. And a topic can come together, multiple topics come together, they can form themes. Right? पूरा domain बनाते हैं. So this is how languages work normally. So we have done a lot in this space with ISM. ISM के 5 fundamental fragments हमने किए हैं. इससे ज्यादा की अभी आपको जरूरत नहीं है. Okay? This will cover a lot. Words भी आपने कर लिए हैं काफी हद तक, letter भी कर लिए हैं. अब हम मूव कर रहे हैं sentences के अंदर. This is where we will dive in. Okay? And it's a very interesting study, and inshallah will open up a lot of things for you. So let me construct few examples. Let's say, let's try to identify the difference between the fragment and a sentence. So if I say blue car, okay, and then I say this is a blue car, which one do you think is a fragment and which one is a sentence? Any thoughts? First Blue is car is fragment. fragment. Blue car is fragment, and this is a blue car Sentence. sentence. What makes you think this blue car is a fragment? Why? Part of information. Blue car. Mm. It's what? It's incomplete, right? Hmm. It's not the full information, it's part of the information, right? So English में इनको parts of speech भी कहा जाता है, English grammar के अंदर, parts of speech, because they are part of a speech, not the full speech. ठीक है? So अभी तक आप ये पढ़ते आए हैं, blue car पढ़ते आए हैं, car of अहमद पढ़ते आए हैं, ठीक है? This car पढ़ते आए हैं, ठीक है? And so on and so forth. You have not done this entire bit. All you have done is how to identify an invisible is. That's what you have done. And we are going to do now the sentences. Okay? Sentences in Arabic are of two types. And it's very simple. Nominal. Nominal, effectively, nominal is a scientific way of saying sentences that are based on isms. Nouns. Okay. अगर सेंटेंस नाउन से स्टार्ट होता है, इसम से स्टार्ट होता है, दैट इज अ नॉमिनल सेंटेंस. If it starts with a verb, then it is called a verbal sentence. Okay? Based on verbs. These are the two sentences. Arabic language में जो इसम से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, उनको जुमला इस्मिया कहा जाता है, इसम बेस्ड सेंटेंस. और जो फेल से स्टार्ट होते हैं उनको जुमला फेलिया कहा जाता है, फेल बेस्ड सेंटेंस. ठीक है? We will start with the ism word. I think fail ने आप लोगों को काफी ड्रिल किया हुआ है. So let's take a break from the fails for a bit. ठीक है? हम ism के ऊपर जाते हैं. वो शायद आपका ज्यादा पक्का वाला दोस्त है. वो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. ठीक है? So our focus for the next few classes will be ism based sentences. Sentences. ठीक हो गया? Now, within the scope of ism-based sentences, every ism-based sentence has three parts. Three parts. I'm not going to name those parts. I'm just calling them A, B, and C for now. The three parts of an ism-based sentence. Of these three parts, A is mandatory. It must be there. Without it, ism-based sentence cannot work. Okay? B and C, one of them must be there. One of them must be there. Okay? So your ism-based sentence is either an A-B structure, it can be A-C structure, and in a normal standard form, it's A, B, and C structure. Okay?
ये 3 components हैं ism based sentences के. Sometimes your sentence can be A C B structure. Things change places. Okay? Sometimes you will see C A B structure. And in some rare cases, you might also see B A C structure. Usually, you will not find B C A structure. It's very, very rare if it exists. Or C B A structure. It's very rare. Okay? इस बात को ज़हन में रखिए कि अगर मैंने आपको इंग्लिश में कहना है कि make sure you study, I can do this. Make sure you study. That's one way of doing it. But if I change this dot with an exclamation mark, what did I change? क्या मतलब हो गया? Emphasis. Emphasis, expression. Emphasis. What if I make it bold? क्या मतलब हो गया? Italic, Have underline, you big, right? So there are things you can do in English language with punctuation that you cannot do in Arabic. Okay? Arabic does not have punctuations. They don't have question marks. They don't have exclamation marks, full stops, commas. Do not exist. So the way Arabic language uh, tells you its expression is by changing the positioning of the words. And also sometimes by changing the type of the word. Sometimes where fa'il could be used, ism is used. Sometimes where ism is used, it could be used, fa'il is used. Okay? So आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आपको ये आप पढ़ते भी हैं इसको, अल्हम्दु एंड लिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ते हैं रोज, ठीक है. Alhamdu is a word that comes from Hamida Yahmadu. Hamida is a fail of Alhamdu. ठीक है. आप इसको ये भी कह सकते थे Yahmadu Lillahi. Okay. Yahmadu Lillahi. या आप कह सकते थे कुल्ल शैइन Yahmadu kullu shay'in lillahi. Everything praises Allah, right? Kullu shay'in is an outside doer of Yahmadu because it's huwa form and it's after and rafa, right? आप इसको इस तरह भी कह सकते थे, but why did Allah choose to use this form and not this form? क्वेश्चन है ना. अब इसमें छोटी सी सटलनेस देखें आप. जो इसम और फेल का एक मेजर डिफरेंस होता है, क्या इसम टाइम डिपेंडेंट होता है? नहीं. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता ना इसम का. नहीं. और फेल का टाइम डिपेंडेंस होती है. जब वो होती टाइम है. गुजर गया, फेल भी गुजर गया, राइट. तो अल्लाह चूज अलहम्दु व्हिच इज परमानेंट, regardless anybody praises or not, regardless whatever time it is, past, present, future, whatever, the praise belongs to Allah. He's not dependent on anything, right? He doesn't need our praise. It's a fact that the praise belongs to him, right? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये आपको इसम दे सकता है, फेल नहीं दे सकता, right? So sometimes there is a choice that is made in Quran if an ism sentence should be used or a fail sentence should be used. And इस तरह एक emphasis बनती है, wisdom change हो जाता है जो उससे निकलता है. ये पूरी एक बलागा स्टडी है, ठीक है. बहुत अमेजिंग स्टडी है. अगर कभी हम जाके उसको करें, मैं आई एम नॉट दैट गुड स्टूडेंट ऑफ दैट स्टडी एट दिस स्टेज, बट आई हैव टच्ड अपॉन फ्यू थिंग्स जो कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे. But it's a full world. और जो ये डिफरेंस है between
the ism based sentence and the fail based sentence, that's huge. Okay, so हम start करेंगे ism based sentence. What I will tell you, I will start to tell you what is A, what is B, and what is C, and how do they come together. ठीक है, कुछ चीजें आपको already पता है. Let's start with something very very basic. Um, let's say I tell you, let's come down here. Let's say I tell you हुआ आपको पता है एक pronoun है, right? And I tell you is Muslimun. हुआ Muslimun. Okay. Now, can you tell me anything about this? I mean, is there an invisible is somewhere here? कुछ हुआ बता सकते हैं? ये अटैच इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद yes. होता है हुआ हुआ Independent pronoun के बाद यहाँ पे invisible is exist करता है, right? Now, what is the word that is starting this sentence? हाँ He. ही He. Hua, right? Now, this hua is going to be our A. Okay? This is going to be our A. Because this is starting this. The word that starts the sentence is your A. Okay? Okay. Now, is there an information about hua in this construct? Hua Muslimun. What is Muslimun telling you? Telling you something about hua, right? Yes. It's a khabar. It's a more information about hua. More information. That part is called B, right? And then there could be an auxiliary information. For example, ये कहता हूँ fil masjid. Fil masjid. ठीक है? हुआ Muslimun fil masjid. He is a Muslim in the masjid. Okay. Now this is an auxiliary information without which sentence would still work, right? Now this information is your C. Okay. This is your C. ठीक. अब हमने इनको कुछ लेबल्स देना शुरू करने हैं. हमने ये समझना है कि ए को कैसे डिटेक्ट करेंगे, बी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, सी को कैसे डिटेक्ट करेंगे. Let me take you to the world of invisible is. The most basic form of ism based sentence is a sentence that is made with is. This is a car. This is a book. And so on, right? This is the most basic form of ism based sentence. Okay. He is a friend. But you can make complex sentences like he is running. Now you have fail and ism together. So we're not going there. We're staying in a very basic form. This is. आपको याद है कि इनविजिबल इज किस किस चीज के बाद हमें मिलता था? Remember those things? independent pronoun Independent pronoun. Pronouns, independent pronouns, बिल्कुल independent pronouns. Nas- Harf of nasab. Harf of nasab. What else? Common followed by proper. Proper followed by comma. Proper Proper followed. followed. Breaks in the Followed chain. by common. Jumla Break Ismiyah in the chain. not sure जुमला There was इसमिया one mix. जुमला इसमिया जिस तरह जुमला इसमिया तो ism based sentence है. Pura. That's it. Pointers, Pointers. Yes. Yes. right? So हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूँ he is a Muslim, this is a boy, indeed I am fine. Okay. If I say this thing to you, so this is an independent pronoun case. This is a pointer case, and this is a harf of nasab case, isn't it? That's a harf certainly I in that case. Okay. When you find the invisible is, the part before is
is your A. Okay? Okay. The part that comes before is your A. So he is A. This is A. Indeed, I is A. Okay? अगर मैं आपको दूं अर्रजुलु रजुलु मुस्लिम, ये कौन सा केस है? Proper followed by. Man is Proper followed by common, right? A proper followed by common. Now, where is the invisible is? Right in the middle. Yeah. Now, which word is before the is? Ar-rajulu, Ar-rajulu. That is your A. the Okay. man. That is your A. So you have found a mandatory part of the Jumla Ismiyah. That tells you that it is going to be a beginning of Jumla Ismiyah. Okay? The ism-based sentence. This A thing, and I'm going to tell you this important point. It's important. This A thing will always be Rafa. Okay? It will always be Rafa unless it is a harf of nasab fragment. Mhm. If you look at independent pronouns, always Rafa. If you look at pointers, always Rafa. If you will look at break in the chain case, it will be Rafa. If you look at proper followed by common, it will be Rafa. And we did this example. Alhamdulillah. Where is the invisible is? After Alhamdulillah. After Alhamdu. What's the status of Alhamdu? Proper. Rafa. 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 Your Alhamdu is your A. Okay? Alhamdu is the A. What is Lillahi? We'll come to that later. Okay? So you're learning how to detect an A. So जो भी आपने invisible is के principles पढ़े थे, उसमें anything that is before the is going to be your A. Okay? Now what is A called in Arabic? इसमें सॉरी फादर, जी। ये जो इशारा वाला दिस, इसमें सिर्फ ए ये है, सिर्फ दिस जो है वो ए हो जाएगा। जी। दिस जी, इसको भी कर लेते हैं। इसमें इशारा जो है सिर्फ वो। जी जी। Let's say we do this. Haza Muslimun. ठीक है? Haza Muslimun. Now in this case, Haza is A. is in the middle, haza is a. Is in the middle. ठीक है? आप कहते हैं Qul hu Allahu, right? Qul hu Allahu. What is A? Who? A. This is a sentence. Okay? He is Allah. This is a sentence. Okay? It's not a fragment. So you have an A which is before the is. And that's why you learned finding the invisible is, because we wanted to go to the sentence structures. Okay? Now, A in Arabic is called Mubtada. Mubtada. It comes from the word ibtada. Ibtada आपको पता है उर्दू में, to start. ठीक है? Mubtada, something that starts. Okay? That's Mubtada. इसको आप अंग्रेजी में भी हम यूज करेंगे मुब्तदा करके, और हम इसको एम भी लिख सकते हैं. What I normally do is I start to label my sentences as A, B, and C. That's easier for students. So whenever we label something A, we mean it's a mubtada. It's the beginning word of the Jumla Ismiyah. ठीक है? ब्रेन जूस तो नहीं बन रहा है यहाँ पे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो आ रहा है, जब तक एक्सरसाइज नहीं आती तब तक आ रहा है। आपको इसकी एक्सरसाइज में मजा आएगा. ठीक है? It's an interesting topic. It's very very, I mean, I don't want to say mathematical because दो डॉक्टर्स हैं हमारे सामने. It's very biological too.
I can tell अब you. नेचुरल फील है ये सही है. So that is a मुब्तदा. So मुब्तदा, अब आपको जब आप छोटे से थे, प्रेप में होते थे आप लोग, तो आपको बताया था कि रफा इज अ डूअर, right? Now I am telling you rafa is also a mubtada. Mm. Yeah. It is a doer, but it's also a mubtada. Rafa can be many things. Okay? So that's the second definition of rafa. What is rafa? It's an i'rab, it's a grammatical state of an ism that can come as a doer or it can also come as a mubtada. Okay? आगे बढ़े. तो क्या आगे बढ़ने के बजाय यहाँ चलते हैं ना थोड़ा सा. बाद में एक चीज हाँ जी. रफा जी. sorry it can be रफा मुब्तदा and मरफू is the same thing for ism. जी जी. Yeah. देखिए, Say. you can say an ism has a status rafa, Yeah. or you can say the ism is marfu. Okay. It's the same सही thing. सही ठीक ठीक है. सही. So It's the same. another way Same. of saying is mubtada is marfu always. सही Doer is marfu always. ठीक Okay. ठीक. अच्छा, यहाँ पे जरा कुछ थोड़ा सा सेंटेंस इसको पढ़ लेते थोड़ा सा. वहुम अला मा यफअलून बिल मुमिनीन शहूद. ये सेंटेंस ये क्या चीज है? Independent pronoun. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन. इसके बाद होता है इनविजिबल इज. या So is this an A for you? Is it mubtada? या Yes. That's a mubtada. ठीक है, it's a mubtada. innal lazina fatanu. आपको लजीना नहीं पढ़ा हुआ आपने, आपको बस पता है कि ये किस्म मौसूल है, लेकिन आपको इस इन्ना की वजह से पता चल रहा है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट. Harf of nasab. Yeah. तो फादर that ये is your इन्नल लजीना सेंटेंस जी. है. नहीं, this is the Fragment. beginning of the sentence. It's a mubtada. It's the thing that starts the sentence. ठीक है. इसको A. छोड़ देते हैं A. थोड़ा सा. ये देख लेते हैं. इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद. इनविजिबल इज किधर है? आफ्टर इन बच्चा In. After inna. After in. After inna? Just इन्ना after बच्चा inna? Inna बच्चा batsha. After the Oh, harf of harf of nasab nasab fragment, के बाद. right? Not after the Yes. harf, right? So inna batsha is your A. It's the mubtada, the starting of a sentence. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Where is the invisible is? हुआ आफ्टर हुआ इन्नहु Who? हुआ. नहीं हुआ इन्नहु Innahu के बाद है कि नहीं है? Let's go step by step. Innahu के बाद है? हु तो अटैच्ड है ना. हुआ के बाद इंडिपेंडेंट के बाद ये वाला Attached who तो pronoun attached है. Agreed. But हाँ. आप इसको as a full bucket देखेंगे ना? This is the fragment, ओ अपना इन्नहु right? Innahu के बाद आ गया invisible is. या So your innahu is a mubtada. It's the beginning of a jumla ismiyah. Okay? ये हुआ के बाद ये होगा। पर फादर इसमें फिर हुआ के फिर बाद आपको ये होगा। हुआ भी आ गया, right? Hmm. Huwa is your another mubtada. It's another jumla ismiyah. Now you can have embedded sentences. We'll go there. ठीक है? लेकिन अभी हम डिटेक्शन सीख रहे हैं सिर्फ कि मुब्तदा को डिटेक्ट कैसे करना है हमने, right? So you see independent pronoun, there's an invisible is. Your innahu is a mubtada number 1. Your huwa is mubtada number 2. Right? Huwa al-ghafurul wadud. Where is the invisible is? After हुआ. After हुआ हुआ huwa. After huwa. So this is start of jumla ismiya. Huwa is a, which is your mubtada. Okay? You see, in just this one page, you have found so many. Okay? So sentence structure is one of the most important topics in your Arabic studies. If you understand sentence structures and the Arab, how the status changes of a word, you have nailed down very major part of Arabic. Okay, so it's very important. Okay.
चले इस पे अभी नहीं जाते। समझ आ गया यहाँ तक? एक और देख लेते हैं, चले ये देख लेते हैं। वल्लाहु इब्राहिम मुहीत। Where is the invisible is? वल्लाहु के बाद वल्लाहु के After बाद ये कौन सा केस बनता है? attached. Is it a pronoun? No. Is it a pointer? No. Is it harf of nasab? No. Is it Break in. proper followed by common? No. No. It Because there is proper, word Allah is proper, but proper. there is no common. There is a harf Oh. after it, right? Is it break in the chain? Probably. Break and chain होगी. It break in the chain, right? Mm. And you see, every time you see it, you will see a ism in rafa state. This is rafa, Mm. this was rafa, or exceptionally मैंने आपको बताया था harf of nasab. Inna bacha was harf of nasab. So the Jumla Ismiyah, a mubtada will always be rafa, excluding the harf of nasab case. Okay? And 95% of time, give me the buffer of 5%. 95% of time, it is also going to be proper. Okay? Mubtada will be proper. There are cases where mubtada is not proper, and we will do that. Okay? But majority of the time, in normal situations, mubtada will be proper. Okay? आगे बढ़ते हैं. Now this is your A. So when I ask you what is a mubtada, you are telling me mubtada can be a pointer, it can be an independent pronoun, it can be ism in rafa, that is proper followed by common. The first one, the word before is. You're telling me if it is a break in the chain case and you have a proper rafa before is, then it is mubtada. You're telling me harf of nasab is always mubtada. ठीक है? ये सारी चीजें हैं. अब हमने जो यहाँ एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट की थी हुआ मुस्लिमन, we have understood what is हुआ. ठीक? Now this part, this we said is B. B is a detail about what mubtada is talking about. Mubtada is basically your subject. It's a topic that you are starting. It's a subject. आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाए गए होंगे जब आप बहुत पुराने होंगे उस वक्त. ठीक है? तो उस ये वही कॉन्सेप्ट है. तो मुब्तदा इज योर सब्जेक्ट एंड नाउ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट. इट्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. दिस मुस्लिमुन has no value if there is no huwa here, right? It is telling you about huwa. Topic is huwa. He is the topic. Now in Arabic, object is called khabar. Okay. Khabar. Khabar. So you have the mubtada, and the mubtada has a khabar. Khabar is an information about the mubtada. Okay? Clear so far? कोई मसला? Mhm. ठीक हो गया. Now खबर क्या होती है? At this point, खबर is always rafa. Mubtada is also rafa. Khabar is always rafa as well. But it is 99% of the time common, not proper. If the khabar is proper, then there is something special going on. There are cases when khabar is proper. Okay? But majority of the time it's common. आप हुआ मुस्लिमन को देख लें, there is a mubtada that's proper and khabar is common. Okay? So whenever you are reading the Quran and you find the first rafa, and that first rafa is proper, then that's most likely your mubtada. Okay? And after the mubtada, if you find another rafa,
and you find it common, that is your khabar. Okay? We will do lots of practice on this. So your basic level of sentence will always have a mubtada and either a khabar or C that we still need to know what that is. Okay? Al waladu al waladu tawilun. Child Okay? tall. The boy is Is tall. tall. Right? The boy is Mhm. tall. Now, what is mubtada and what is khabar? Tata is Walad. al-walad. Al-waladu. Al waladu is the Tawilun. mubtada and tawilun is the Khabar. khabar. Right? Mhm. If you have an auxiliary information, what is C? C is an auxiliary information. C can be represented in two ways. The first way C is represented by the way, before I go to C, one reminder. Now, Rafa can be a doer, it can be a mubtada, and it can be a khabar. Yeah. Right? Three things. So Rafa represents three things. Now let's go to C. Now C is auxiliary information, some additional information that is about the khabar, okay, or sometimes about the mubtada. It can be represented in two ways. One, it will either be a harf of jar fragment, okay, or it would be an idafa with special mudaf. So when you see a harf of jar fragment or an idafa with special mudaf, that is your C. Okay. Um, inna innal muslimina innal muslimina um, jalisun. Jalisun means sitting, Sitting. to sit. Okay. Fil masjid. Not me, Fil. Now this is lots of Arabic in front of you. Okay. Let's decode that. So you go from right to left. Innal muslimina. You know this. What is the role of this here? So is it A, B, or C? Is it mubtada, A. khabar, or C? It is A. You know it's a mubtada. It's a beginning of a sentence because there is an invisible S. So that's an A. Okay? Let's mark it as an A. And you have the first rafa, which is common. So this would be what? B. 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 Khabar. B. Khabar. Khabar. And then you have a jar majroor Okay. fragment. Yeah. C. And that is your C. Hmm. Okay? Okay? It could have been, I could write Fauka Shajaran, above the tree, on the tree. So indeed, Muslims are sitting on the tree. Okay? Because Muslims can do anything, they have the power to do anything. Mhm. So if it was a special mudaf, idafa, that would also be a C, basically. Okay? Now, C is an auxiliary information. It's an information related to the khabar. जब किसी चीज का किसी चीज से ताल्लुक होता है उसको अरबी में कहते हैं मुतअल्लिक 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 और जिस चीज से ताल्लुक होता है उसको कहते हैं बिल बिल खबर
कहाँ जा रहा है मार्क पॉइंटर? बिल खबर, ठीक है. See, in Arabic is called muta'alliq bil khabar. It's related to the khabar. Okay. So if you can't say muta'alliq bil khabar, but I'm sure you can. It will become very used to it. Muta'alliq bil khabar. So that's your C, and you have more ammunition to impress your imam. Imam sahab, mubtada khabar muta'alliq bil khabar. You know, marfu, mansoob, and majroor. So he is going to be very. Junaid can go to Khizr bhai and Bilal bhai can go to Imam Yahya. Okay? You can control. So these are the three components of a Jumla Ismiyah. ठीक है? तो तो फहद भाई इंशाल्लाह इसके ऊपर जी जो सी है, सी, जी अगर हमें ए और बी हमारे पास हैं तो ऑलवेज सी होगा या सी नहीं भी होगा कभी कभी, नहीं। और ए और नहीं। बी कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस. जी, जो मैंने आपको पहले बताया, तो मैंडेटरी पार्ट इज द ए. यहाँ पे हमने देखा था ए इज मैंडेटरी. One of the two will exist. अच्छा, In best case, in the normal case, all three exist. ठीक है? So that is the fundamental structure of ism based sentence. इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम दबा के प्रैक्टिस करेंगे, कुरान की एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह, and things will move on from there on. ठीक है? चलें. Thank you. बहुत शुक्रिया. Thank you. इंशाल्लाह मुलाकात होगी. Jazakallah. इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum.